गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे प्रसिद्ध कृष्णा। That is back in action. और कमाल का कैच, और कौन हो सकता है, मनीष पांडे। लाजवाब कैच। तभी कहते हैं कि बड़ी स्क्रीन हो तो चुलबुल पांडे और मैदान हो क्रिकेट का तो मनीष पांडे। सुपरमैन, जी हां, उड़ता हुआ खिलाड़ी अगर मैदान में नजर आए और आपको सुपरमैन की अगर याद आए तो समझिए कहीं ना कहीं मनीष पांडे होंगे। पहला विकेट खोया उत्तर प्रदेश ने, करण शर्मा खाता नहीं खोल पाए। न्यू बैट्समैन इन नीतीश राणा। And that's how Nitish Rana welcomes him. बढ़िया शॉट खेलते हैं, पिकअप शॉट। और ये शॉट देखिए सीधे बल्ले से मारा है मिड विकेट के ऊपर से। Uppercut deliberately played over the infield. That smashed down the ground. That'll be a six. His partner is trying, good effort, but that eludes, and he will get a boundary too. Fluent shot this from the right-hander, misfield as well. That will be a boundary, and that will bring up the 50 of the innings. Another misfield, and that will result in a boundary again. Oh, that's nicely hit. Another boundary. The dealing in boundaries. ये बढ़िया शॉट खेला है, बहुत जल्दी पढ़ लिया था उस धीमी गेंद को। साझेदारी को तोड़ना जरूरी है और यहां टूट सकती थी। यही हम फील्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, मिल गई विकेट। इसी की जरूरत थी यहां कर्नाटका को। Just slow delivery, just trying to hit over covers, but didn't time it to perfection. A straightforward catch to Mayank Agarwal, who made no mistake. Nitish, who is batting beautifully, out for 40, 87 for 2. समीर रिजवी अब नीतीश राणा के आउट होने के बाद क्रीज पे आए हैं। Look at that. And this is what he's known for. Effortless. एक बार फिर स्ट्रेट ड्राइव, अर्धशतक पूरा हुआ यहां अभिषेक गोस्वामी का इस बाउंड्री के साथ। एक शानदार पारी खेली है अपनी टीम के लिए। Oh, inside eye, it doesn't matter. It races to the fence. और दिलेर है आज, जिस तरह की पारी खेल रहे हैं अभिषेक गोस्वामी। Oh, look at that, a slog sweep again. Another boundary. Back-to-back 3 boundaries. मिस टाइम तो नहीं हुआ, बिल्कुल बीच में आके गेंद लगी है। धीमी गति की गेंद, बैक ऑफ द हैंड रिलीज। वाइशाख आए और आते संग ही ये बढ़िया विकेट मिली है इनको। Sameer Rijvi, bowled by Shaq for 14, 125 for 3, a big wicket. Rinku Singh, the man of the moment, comes in. 87 innings, 1973 runs. Nicely hit. This is Rinku Singh for you. Short ball, pulled for another boundary. Back-to-back boundary. Straight hit. That will clear the rope. Another 6 here. Appeal. I don't think the umpire will agree with him. As he, yes. चलिए देखते हैं इम्पैक्ट कहां था। टच एंड गो। अभिषेक गोस्वामी 77 रन की बढ़िया पारी खेलकर आउट हुए। 152, 4 विकेट के नुकसान पर उत्तर प्रदेश। Dhruv Jurel is walking out to bat. Healthy strike rate that. ना 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 ना, बहुत ही साधारण गेंद।
That's hammered away, but straight into the hands. Oh! That smashed way into the forest. That's it, Krishna Tezul the last over. But he's not spared either. That's a glorious hit. That's picked up and picked up well too. 196 रन बनाए हैं सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। 22 गेंदों पे 44 जोड़े इन दोनों ने। Karnataka will have a दोनों ही टीमें इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना चाहेंगी और यहाँ पे ये आए हैं मोहसिन। अभिषेक गोस्वामी बाहर गए हैं। Devdutt Padikkal is the one who's opening the batting. 91 inning guy. With him is Mayank Agarwal. Karnataka off to a good start. Off the back foot. Break through mid wicket for 4. First 4 of the innings. Again off his legs. Another flick off his legs for another boundary. Second boundary of the over. लीजिए पहली विकेट। Absolutely. Look at how far away his bat was. He tried to play on the up through point, got an inside edge and was cleaned up. Devdutt Padikkal out for 1. कृष्णन श्रीजीत अब क्रीज पे आए हैं। दिशा पे नियंत्रण रखिए। दिशा खराब तो दशा खराब। Good pass full of his time. Oh, look at that. Punched off the back foot. Adele gave bit. फील्डर है पीछे, एक और विकेट मिलेगी। Look at that. Shorter than delivery. The fielder was back of hand delivery. Fielder was already there and Rinku Singh made no mistake. A good catch by Rinku Singh. Wicket number 2 goes of Karnataka. Srijit out for 8. 27 for 2. Karnataka. मनीष पांडे अब क्रीज पे आए हैं। चलिए, सोच बुरी नहीं थी यहाँ। पीछे फील्डर है नहीं। Another one. Oh, misfielding. Another boundary. Back-to-back boundaries. खास तौर पे अगर ये साझेदारी इसी तरह से बनती रही। down the ground, he split the fielders, and that will be a boundary. And he's gone, knocking the middle stump back. बिल्कुल ठीक कहा आपने। नथिंग शॉट। 11 बनाए 9 गेंदों में मनीष पांडे ने। 60 पर 3 कर्नाटका। The wicket-keeper batter Sharath is out there at the fall of wicket. Straight down the ground, that's high and handsome. That's a 6. And that 6 brings up the 50 for the Karnataka skipper. Superbly hit. Helped away, that'll go to the boundary as well. That smashed away, that's a good hit. Oh, up in the air, up in the air, up in the air. And I made no mistake. Off the front foot, tried to hit it over mid-wicket, could not time it. And Dhankar took a brilliant catch. That was a crucial wicket. A big blow to Karnataka. Mayank Agarwal out for 59, 109 for 4, Karnataka. मनोज भंडगे अब क्रीज पे आ रहे हैं। That's nicely played, nicely hit, straight to fielder as you were talking. 2 set batsmen out in the hut. Straight to mid-wicket. No mistake, he didn't have to move an inch. Straight into his hands, Rinku Singh. Sharath, who was batting beautifully, out for 26. 113 for 5. इम्पैक्ट प्लेयर कर्नाटका के अभिनव मनोहर। बिल्कुल सामने। And he gets a wicket straight away.
and try and seal the game straight away in the 17th and the 18th over. मैं स्लोअर की बात कर रहा था, भुवनेश्वर ने कहा नहीं जी, मेरी ताकत तो यहाँ यॉर्कर है, और यॉर्कर देखिए कितने बढ़िया तरीके से मारा है। अभी मनोहर को वापस जाना होगा 13 रन बना के। कर्नाटका 139 पे 6। Krishnappa Gautam walks out to bat. Used to lower order batter. Strike rate is impressive, 157. Into the hands, another wicket goes here. He's not waited for Bhuvneshwar Kumar to bowl the 18th or the 20th over. He's brought him in here to make his moves as the skipper, UP skipper, and he's reaping rewards. वनडे पे गए, 13 रन बना के आउट हुए। Bhuvneshwar Kumar on top of things here. Big shout. And the umpire takes his time as is wont and gives the batter out. What an over this is. जब हम रिप्ले में देखते हैं, थोड़ा सा वो गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच करता हुआ भुवनेश्वर कुमार को मिलती तीसरी सफलता इसी ओवर में। शुभम हेगड़े को वापस जाना होगा, खाता नहीं खुला उनका। Bhuvneshwar Kumar picking up 3 wickets. He's in a hat-trick. Almost squeezed through. Goes big, does Gautam, and clears the boundary comfortably. Scooped over the infield. Cute shot from Gautam. Hit down the ground. There's some work for the fielders in the deep. They won't cut it off. It'll run away to the boundary. And picks up another one. एक बार पेस से उस स्टंप्स में गेंदबाजी करते हुए और उसका पूरा फायदा मिलता हुआ भुवनेश्वर कुमार को और उत्तर प्रदेश को भी। व्याशक को वापस जाना होगा 2 रन बना के। कर्नाटका 156 पे 9। Last man walking out for the Karnataka side, Vidwat Kaverappa. He picks up a 5-hour, Bhuvneshwar Kumar. That's a fantastic performance by the seasoned campaigner from Uttar Pradesh.